Eyes open, ink is dry. Why did we let this first truth die? The maps are there for us to use, the rhizome that we fear to choose. They warned us of the rigid mold that breaks the map, the vital fold. Yet we prefer the root the same and bind ourselves in fear and shame. They warned against the law of kin, affiliation we are trapped within. We are not built like rooted trees, but are defined by hierarchies. Blind habits block the active will and force the nomad to stand still. We lack connections far and wide and lines of flight that lead outside. Wasp and orchid both embrace the folding of a different space, but when our lines begin to grow, we still repeat the ancient no. To break with common sense, for now the tree of power stands and grips the world with rigid hands. So this remains a scholar's thought, a battle promised but unfought. We need to change and to transgress, but fear the middle's raw excess. We yearn to change and to transgress, and seek the strength to whisper yes. A tyrant mask, a rigid wall that casts a shadow on us all. The abstract machine grinds and waits, seals the locks upon our gates. The white wall spreads the guiding signs, the black hole traps the fleeing lines. It nails our soul to what we are, a fixed and signifying star. Of the past, the face of Christ designed to last. The social code we have to learn. The boss, the father, cold and stern. They trap existence in a gaze, reduce our lives to sinful ways. This serves the sign, applies the seal to make the ruling order real. But hope arrives in whispered art, a chance to tear the mask apart, to see the face. Just a field of lines and colors unconcealed, a swarm of traits we shall become, unsinking from the marching drum, a defactualizing act of grace to find the world beyond the voices slow, where traits begin to merge and flow. A clandestine and vital speed, a non-human and precious seed. This dangerous inhuman quest to put the face at last to rest, a signifiant wild and new, a life the face could not subdue. And hope arise in whispered art, a chance to tear the mask apart, to see the face is just a field of lines and colors unconcealed, a swarm of traits we shall become, unsinking from the marching drum, a defactualizing act of grace to find the world beyond the face. I am the form, the architect. I find the chaos, some neglect.
I'll find the smoothie empty field and build the wall that is your shield. I am back. चलो भाई स्टार्ट कर दे आज की रीडिंग। कल मतलब कल नहीं, पिछली बार कहा रोका था, वहाँ से ही चालू करने की ट्राई करेंगे, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, शायद आर्टिकल 227 2027 कहने वाला था। चलो भाई, अब सही आ रहा है। बेइज्जत क्या कर रहा हूँ मैं। आर्टिकल 227, पावर ऑफ सुपर intendence over all courts by High Court. Every High Court shall have superintendence over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercises its uh, juridi- jurisdiction. सुपरिंटेंडेंस क्या होता है भाई? चलो ज़रा थोड़ा डिटेल में करते हैं। The act of superintending, supervision. Okay, that really clarifies a lot. Like it literally doesn't clarify shit. ओके, शायद कोई सुपरवाइजर इस तरह का कोई रोल है ये। इसके बारे में आगे लिखा होगा मोस्ट लाइकली, क्या इसके फंक्शन होंगे। तो लेट्स सी वो क्या होते हैं। Without prejudice to the generality of foregoing provision, the High Court may call for returns from such courts. Clause B. Make and issue general rules and prescribe forms of regulating the practice and proceedings of such courts. And C. Prescribe forms in which books, entries, and accounts shall be kept by the officers of any such courts. Article 2020 NS 227 का क्लॉज 3 क्लॉज ही होता है ना।
Clause the High Court may also settle tables of fees to be allowed to the sheriff and do we have sheriffs? देखो मेरे हिसाब से तो हमारे यहाँ शरीफ नहीं होते पर मैंने पहली बार ही सुना. The High Court may also settle tables of fees to be allowed to the sheriff and all clerks and officers of such courts and attorneys, advocates and pleaders practicing therein, provided that any rules made, from prescribe or table setter under clause 2 or clause 3 shall not be inconsistent with provision of any law for time being in force and shall require the previous approval of the governor. Mm. Yeah, okay, useless article. Whatever, I don't. मैं यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन रीड कर रहा था and I really enjoyed. Okay, I think it is better than Indian constitution. Like just it is better than Indian constitution, man. Transfer of certain cases to high court. रुको भाई कॉल आ रहा है. कॉल आ रहा है. The book lies open, the ink is dry. Why did we let this first truth die? The maps are there for us to use, the rhizome that we fear to choose. They warned us of the rigid mold that breaks the map, the vital fold. Yet we prefer the root the same and bind ourselves in fear and shame. They warned against the law of kin, affiliation we are trapped within. We are not built like rooted trees, but are defined by hierarchies. Blind habits block the active will and force the nomad to stand still. We lack connections far and wide and lines of flight that lead outside. Wasp and orchid both embrace the folding of a different space, but when our lines begin to grow, we still repeat the ancient no. We seek the plane of immanence, but fail to break with common sense. For now the tree of power stands and grips the world with rigid hands. So चलो वापस आ गए. Hmm. Uh, Transfer of certain rights. If High Court is satisfied that a case pending, okay, transfer. If the High Court is satisfied that a case pending in a High Court, in a court subordinate to it involves a substantial question of law as to the interpretation of this constitution, the determination of which is necessary for the disposal of the case, it shall withdraw the case and may either dispose of the case itself or determine uh, subclause B to determine the said question of law and return the case to the court from which the case has
been so withdrawn together with a copy of its judgment on such question, and the said court shall, on receipt thereof, proceed to dispose of the case in conformity with such judgment. Okay. ओके ठीक है, मतलब ये तो एक नॉर्मल सिटीजन के हिसाब से तो मतलब लास्ट टाइम कौन सा कौन सा साल था जब हाई कोर्ट ने कुछ बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया था, मतलब they give average decision like they give up anybody, so I don't find it meaningful in any way. Article 228A, special provisions as to disposal of question relating to constitutional validity of state law omitted by the Constitution. 43rd Amendment Act. ओके, अभी ये तो मुझे समझ ही नहीं आया. ओके, ये होगा स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से जाएगा इनकी पेमेंट. अब आर्टिकल 229, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द एक्सपेंस ऑफ हाई कोर्ट. Appointments of officer and servants of High Court shall be made by the Chief Justice of the court or such other judge or officer of the court as he may direct. हो गया. किससे होगा? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड ऑफिसर के तरफ से. Provided the governor of state may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the court shall be appointed to any office connected with the court after consultation with State Public Service Commission. ओके, जो कोर्ट सिस्टम से अटैच नहीं है उसको नहीं बना सकते. और वो पुलिस चेक करेगा कि ये बंदा कोर्ट सिस्टम से कनेक्टेड है या नहीं, आई गेस. सब्जेक्ट to the provisions of any law made by the legislature of the state. The condition of service of officer and servants of High Court shall be of High Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of the court or by some other judge or officer of the court authorized by the Chief Justice to make rules for the purpose, provided that rules made under this clause so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions require the approval of the governor of the state. So basically इन्होंने क्या कर दिया है, प्रेसिडेंट का रोल गवर्नर को दे दिया है स्टेट मशीनरी के हिसाब से, और वहाँ का जो प्रेसिडेंट का रोल दिया गया है नेशन लेवल पे वो गवर्नर को दिया है. तो वहाँ का वहाँ यहाँ चेप दिया है इन्होंने, जो कि ठीक है भाई. यूएस को कॉन्स्टिट्यूशन बस 17 से 18 पेजेस का है, मतलब, और ये इधर चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है. 3 महीने भी नहीं हो गए, बहुत महीने हो गए भाई, और कंटिन्यू भी नहीं किया. अभी बस मैंने 1/3 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और अभी तो बहुत है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ रीडिंग का टाइमिंग. Provided that the rules made under this call shall okay.
The administrative expenses of High Court, including all salaries, allowances, and pension payable to or in respect of the officer and servants of the court, shall be charged upon the consolidated fund of the state, and any fees or other monies taken by the court shall from the part of that fund. Okay. एक्सटेंशन ऑफ, वैसे इंडिया के कोर्ट्स में कितना खर्चा होता है ईयरली? रुको देखते हैं ज़रा. How much money is spent on Indian courts by the state? बहन चोद, बस 0.1% यूनियन का बजट जाता है और स्टेट से ही मेजरली फंडिंग आती है. अरे भैया भैया, और जो स्टेट होते हैं वो भी बस 1% ही स्पेंड करते हैं, और दिल्ली का मैक्सिमम है जो कि 2% स्पेंड करते हैं एक कोर्ट्स के खर्चे पर. और उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है 1614 करोड़, 0.35% ऑफ उसका पूरा बजट. बेंचोत. अरे भाई बहुत कम खर्चा हो रहा है स्टेट पे, ये सुप्रीम कोर्टों पे. अरुणाचल प्रदेश तो 5 करोड़ खर्चा कर दिया है. और पर पर्सन 450 रुपए का खर्चा होता है पर कैपिटा. ओके, मतलब खर्चा नहीं ज़्यादा कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि इनका काम बहुत अच्छा है. लाइक एक बार कुछ एक चीज़ चली गई तो हज़ारों सालों तक वही रहता है, कोर्ट में ही मामला चलता है. ऐसा नहीं कि भाई हाँ बहुत कम खर्चे में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. लोगों को डर लगता है नो, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट. इस तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पर इंडिया में. एक्सटेंशन ऑफ, ओके अगला आर्टिकल, आर्टिकल 213. एक्सटेंशन ऑफ jurisdiction of high courts to union territories. Parliament by law extend the jurisdiction of high court to or exclude the jurisdiction of a high court from any union territory. Okay. Where the high court of a state exercises jurisdiction in relation to union territory. Clause 1. Subclause A. Nothing in this constitution shall be construed as empowering the legislature of the state to increase, restrict, or abolish that jurisdiction. कॉन्स्टिट्यूट यानी कि ये मान लेना कि हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं. बी. द रेफरेंस ऑफ इन आर्टिकल 227 to the governor shall in relation to any rules, forms or tables for subordinate courts in that territory be construed as reference to president.
ओके, तो यूनियन टेरिटरी को भी हाई कोर्ट अपने अंदर ले सकते हैं, अपने जुरिडिक्शन के अंदर, अगर पार्लियामेंट से डिसाइड किया जाता है तो। ओके ठीक है। नॉट ओके। आर्टिकल 231 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states। ओके। Notwithstanding anything contained in the preceding provisions of this subchapter, Parliament by law established a common high court for 2 or more state or for 2 or more state and union territory in relation to any such high courts। ये ओके, ये क्या होता है भाई? ओके, मैं रुको गूगल करके आता हूँ, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो। ओके भाई, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा क्या करता है ये। रुको, अब शायद एक ओ भाई, तो यहाँ पर जो ये स्टार स्टार दिखाया गया है वो निकाला गया था। यहाँ पर एक आर्टिकल सब क्लॉज था, वो निकाला गया है, और उसको लेकिन बाद में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था। लेकिन उस हमारे पास वो पीडीएफ का वर्जन नहीं है जिसमें ये आर्टिकल है। तो एट द बेस्ट अब हमें पता तो है, ये गूगल पे देख सकते हैं, लेकिन ये जो स्टार होते हैं वो जो आर्टिकल निकाले गए उनके लिए होते हैं। B. The reference in this article 2020 as 227 to the governor shall, in relation to any rules, forms or tables for subordinate courts, be construed as reference to the governor of the state in which the subordinate courts are situate. And subclause D. The references in articles 219 to 229 to the state shall be constituted as a reference to the state in which the High Court has its principal seat। ओके, ये तो भाई कहाँ पर है भाई, कहाँ कौन सा स्टेट है जहाँ पर
कौन से स्टेट है जहाँ पर दो स्टेट में एक हाई कोर्ट शेयर हो रहा है? क्या ऐसा स्टेट भी एग्जिस्ट करता है क्या, या बस ये फालतू का आर्टिकल है? इज देयर एनी इंडियन स्टेट विच शेयर्स हाई कोर्ट with other states? हो गए पंजाब और हरियाणा में। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट के जो चार राज्य है उनका असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन चार स्टेट का एक ही कोर्ट है, हाई कोर्ट, और वो है इसमें गुवाहाटी में, गुवाहाटी आसाम में। हाँ, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी एक कोर्ट को ही शेयर करते थे, लेकिन अब नहीं करते। और जम्मू एंड कश्मीर में भी एक ही हाई, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में एक ही था, लेकिन अब दो हो चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी भी एक ही है भाई। अरे भाई, ओ- हो सकता है कि वहां पर भी ये हो रहा है, बदलाव हो रहा है, और दोनों स्टेट के लिए अलग अलग होगा। चलो भाई, समझ में आ गया, कुछ नई चीजें पता चली। इंटरप्रिटेशन, आर्टिकल 232, आर्टिकल्स 232, 31 एंड 232 subs by articles 230 7। ओके, ये तो समझ ही नहीं आया भाई। सबऑर्डिनेट कोड्स, आर्टिकल 233, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, अपॉइंटमेंट of persons to be and the posting and promotion of district judges in any state shall be made by the governor of the state in consultation with the high court exercising jurisdiction in relation to such state. Clause 2. A person not already in the service of the union or of the state shall only be eligible to be appointed a district judge if he has been for not less than 7 years an advocate or a pleader and is recommended by the High Court for appointment. ओके, प्लीडर क्या होता है भाई? एडवोकेट तो समझ आता है, लॉयर ये सब लोग। ओके, प्लीडर में भी जूनियर हो सकते हैं, एडवोकेट के नीचे काम करने वाले, उन लोगों को कहा जाता है। लाइक, अब नहीं पता भाई, यहाँ पर भी क्लियर डेफिनेशन नहीं दिया गया। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं थोड़ा अच्छा रीड कर रहा हूँ? नहीं तो पहले तो मेरी रीडिंग कैसे भी थी, अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा रीड कर रहा हूँ, मुझे खुद भी ज़्यादा समझ आ रहा है। आर्टिकल 233A, वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड judgments etc. delivered by certain district judges, notwithstanding any judgment, decree, or order of any court. Clause A 1. No appointment of any person already in the judicial service of a state or of any person who has been for not less than 7 years an advocate or pleader to be district judge in the state. And second, no posting, promotion, or transfer of any person as a district judge made at any time before the commencement of the Constitution, 20th Amendment Act 1966. Otherwise, then in accordance with provisions of Article 2 or articles shall be deemed to be illegal or void, or ever to have become illegal or void by reason only of the fact that such appointment, posting, promotion, or transfer was not made in accordance with the said provisions.
B. No jurisdiction exercised, no judgment, decree, sentence, or order passed or made, and no other act or proceeding done or taken before the commencement of this Constitution, 20th Amendment, Act 1996, 1996 and 1966, by or before any person appointed, posted, promoted, or transferred as a district judge in any state, otherwise in accordance with provisions of Article 233 or Article 235 shall be deemed to be illegal or invalid, or ever to have become illegal or invalid by reason only of the fact that such appointment, posting, promotion, or transfer was made in accordance with the said provision. ओके, ये आज़ादी के बाद के इस तरह के ये थे, अब इनका कोई ये नहीं रह चुका, बस इसका भी यूज़ है। कम से कम मिनिमम 7 सालों तक तुम्हें एडवोकेट या लीडर होना होगा, तभी तुम बन सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज। 200 and Article 234, recruitment of person other than district judge to the judicial service. Appointments of person other than district judge to the judicial service